नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट दृश्य पर, जहां आपको मिलेंगे एग्जाम रिलेटेड टॉपिक्स, वो भी एक डिटेल्ड वे में विद एग्जाम टिप्स एंड मेनी मोर। तो आज है बायोलॉजी सीरीज का पार्ट 6, जहां हम जानेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इन अ मोर डिटेल एंड प्रिसाइज वे। और हाँ, ये एक टॉपिक है जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर आता है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, नेट हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। और हाँ, ये सेक्शन से यूजुअली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो अब पेन और नोटबुक रेडी रखिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड टेक नोट्स ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन एज वेल एज द क्वेश्चंस दैट आई विल बी पुटिंग अप टू यू and solve those questions to gain more knowledge and get expertise in this section. To get such details, do not forget to like, share and subscribe our channel so that we can come up with more such regular exam related topics. तो section 1 में जानते हैं introduction to the digestive system. Digestion is the process of breaking down of food into smaller absorbable forms. It occurs through mechanical, enzymatic and chemical factors के रीजन से। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का और एक नाम है एलिमेंट्री कैनल और जीआई ट्रैक्ट, जो लगभग 9 मीटर्स लॉन्ग है अप्रॉक्सीमेटली। और इनके जो मेन कंपोनेंट्स है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और एलिमेंटरी कैनल्स। एंड यू नीड टू नो दैट डाइजेशन शुरू होता है माउथ में, बट वो एंड होता है, इसका जो प्रोसेस है वो एंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये था इंट्रोडक्शन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आ सकते हैं आपके एमसीक्यूज एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो होंगे, बट मैच द फॉलोइंग्स भी आ सकते हैं। एंड वेयर डज दिस प्रोसेस एंड, इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन body does the digestive system ends and where does it starts? They can put up this question to you in MCQs. तो अब सेक्शन 2 में जानते हैं एलिमेंट्री कैनल के बारे में इन डिटेल्स। पहले जानते हैं माउथ एंड बुकल कैविटी के बारे में। जो टीथ है वो माउथ में प्रेजेंट होते हैं एंड च्यूइंग ऑफ फूड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड मास्टिकेशन। सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमिलेज, और एक नाम है टाइलिन, और ये स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। अगर इसका एसिडिटी चेक करें, दैट इज द पीएच लेवल इन माउथ, इट इज स्लाइटली एसिडिक, दैट द नंबर कम्स अराउंड 6.8। अब जानते हैं फेरिंक्स एंड ओसोफेगस के बारे में। यहाँ पे कोई डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, इट जस्ट एक्ट्स एज द पैसेज फॉर द सिस्टम टू कंटिन्यू। और पेरिस्टाल्सिस है रिस्पॉन्सिबल, जो पुश करता है फूड को टुवर्ड्स द स्टमक। जानते हैं स्टमक के बारे में, जो जे शेप्ड होता है विच स्टोर्स एंड चम्प्स फूड। और यहाँ से कुछ सेक्रेशंस भी होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेशंस जो होते हैं। फर्स्ट है HCI, जो एक एसिडिक मीडियम है। फिर है पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन कंटेन करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन। फिर आता है म्यूकस, जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है। चीफ सेल्स प्रोड्यूस करता है पेप्सिनोजन, और जो पैराइटल सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं HCI। अब जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, जो एक मेजर साइट होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। बाइल फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम पैनक्रियास यहाँ पर ही एक्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो होता है थ्रू विली। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पे बस वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ऑल्सो द वेस्ट फ्रॉम फेसेस गेट्स डन हियर। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे कि माउथ एंड बुकल कैविटी का जो च्यूइंग फूड प्रोसेस है उसका नाम क्या है, इज इट एसिडिक इन नेचर और नॉट, एंड इफ इट इज देन व्हाट इज द पीएच लेवल, देन व्हाट इज द एंजाइम दैट द सलाइवा कंटेन्स, यू हैव टू नेम द एंजाइम एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। And then you can expect questions from stomach as well, that what are the secreted glands that it secretions, you have to name them, and who produces which one, that HCI produces which cell. And then you can expect questions from the smaller intestine as well, that what are its 3 parts, bile is created from where, and where does all the process takes place, and even where does the absorption of electrolytes takes place in which organ of the human digestive system. So these are the questions that you can expect from this section 3. तो अब सेक्शन 3 में जानते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। वेरी ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं, जैसे पैरोटिड, सबमंडिबुलर, एंड देन द लास्ट इज सबलिंगुअल, एंड इट प्रोड्यूसेस सलाइवा ऑलमोस्ट 1 to 1.5 liter per day. Then have liver, which is the largest gland, and it produces the bile, and it gets stored in the gallbladder. And bile helps in the emulsification of fats.
फिर जानते हैं पैनक्रियास के बारे में, जो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये जो रिस्पॉन्सिबल है सेक्रेटिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स के लिए, जैसे कि एमिलेस है कार्ब्स, ट्रिप्सिन है प्रोटीन, एंड देन लिपेज जो फैट्स है। नाउ एक्सोक्राइन ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो ग्लूकागोन एंड इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो मैल्टेज लैक्टेज ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो इस सेक्शन से जो आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो वो होंगे दैट व्हाट इज द लिवर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड व्हाट डज द पैनक्रियास juices that it excretes. Then you can also know about the different types of the enzymes, that is the lipase, lactase. They can ask questions, what is the biology term for the carbs in the human body, and then also the intestinal glands, what does it produce, which gland produces the glucagon and insulin. You can expect such questions from this section and it's very important. Just take note down of all the questions. अब सेक्शन 4 में जानते हैं एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन के बारे में। एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन वाया विली होता है, एसिमिलेशन में न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, एंड इजेशन में दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो टेक प्लेस in the ileum. From this section you can expect minor questions, that where does the maximum absorption takes place, what is absorption, assimilation, egestion, main terms related to them. Just remember the definitions and you're ready to go. These are the sections related to part 6, that is the digestive system, and take a note of all the different topics that I've covered in each of the section by dividing it into 4 sections as well, and note down the questions because these are the most expected questions in all the competitive exams. And if you want to refer to any book, then a book recommendation for you, that is Trueman's Elementary Biology book. Refer to that if you want to grab more details regarding this subject as well as the topic. I hope I have covered all the topics, but if you have any query then you can comment down and I'll try to solve it ASAP. And do not forget to like, share and subscribe Govt Drish so that we can come up with more such regular contents related to the variety of subjects for your competitive exam and for your benefit. तब तक फोकस रहे और Govt Drish के साथ ग्रो करें. Meet in our next video. Stay tuned.